Hello dear students, I hope you all are doing great. In the last lecture we discussed meaning of bookkeeping and accountancy, and today we are going to start with basic accounting terminologies. Because before proceeding with the subject, हमें subject के जो basic terms हैं उन सारे terms की meaning अच्छे से पता होना चाहिए. जब हमारा terminology strong होगा, जब हमारा base strong होगा, ठीक है, तो इस solid base पे से हमें बहुत अच्छे subject knowledge को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी. जब बच्चों मैंने आपको बताया था व्हाट इज बुक कीपिंग, वी डिस्कस दैट बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ सिस्टमैटिक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. अब ये सिस्टमैटिक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो ठीक है, हमने देख लिया. ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑकरेंस डेट वाइज वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड दिस बिजनेस ट्रांजैक्शन. तो पहले पता तो चले कि ये ट्रांजैक्शंस एग्जैक्टली होता क्या है, ये ट्रांजैक्शंस होते क्या है, कैसे होते हैं. तो बच्चों जब मैं ट्रांजैक्शन की बात करूंगा, ये ट्रांजैक्शन क्या होता है, तो डू रिमेंबर ट्रांजैक्शन मींस एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर मनी और मनीज वर्थ. So when goods and services are exchanged for money or money's worth between two or more person or parties, such exchange is known as transaction. और accounts में जब हम bookkeeping and accountancy पढ़ते हैं, we have to classify this transaction into major categories, that is monetary transactions and non-monetary transactions. तो ये जो बच्चों मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं और नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस क्या होंगे, हम इन्हें डिस्कस करने वाले हैं. सो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस are the transaction where the value of goods and services is measured, or in such transaction where the value of goods and services is known to us. वैसे transactions को हम कहेंगे monetary transaction. And on the other hand we have non-monetary transaction where the value of goods and services is not known. हमें पता नहीं होता है कि goods और service की value कितनी है. तो यहाँ पे under monetary transaction we have cash and credit transaction. What is cash transaction? Cash transactions are the transaction where the goods and services such exchange will take place against immediate payment. जहाँ पे on the spot payment होगा और goods and services को exchange किया जाएगा, such exchange is known as cash transaction. And on the other hand, where the exchange of goods and services that will take place but payment will be not made immediately, payment will be made on future date. जहाँ पे payment होगा बेटा future date में बाद में payment होगा, such type of transactions are known as credit transaction. And do remember हम bookkeeping and accountancy में we are going to record only monetary transaction in the books of accounts. मतलब हम सिर्फ cash और credit transaction को books of accounts में record करने वाले हैं. We are not going to record non-monetary transaction in the books of accounts where the value of goods and services is not specified or not known to us. Example है non-monetary transaction का barter transaction where the one commodity is exchanged for another commodity. तुम मुझे राइस दो, मैं तुम्हें वीट दूंगा. अब यहाँ पे राइस और वीट का अगर वैल्यू ही नहीं पता है, हमें कितनी वैल्यू का वो अमाउंट है, सॉरी ट्रांजैक्शन है, वो कमोडिटी की वैल्यू क्या है, अगर हमें वही नहीं पता है, तो सच नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. विल बी रिकॉर्डिंग ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन टू अस. तो बच्चों ये रहा हमारा ट्रांजैक्शंस एंड देयर क्लासिफिकेशन. एक बार कंटेंट देख लेते हैं. सो व्हाट इज ट्रांजैक्शन? Exchange of goods and services. Yeah, let's start with highlighting the things. Yeah. So exchange of goods and services between two person or parties for money or money's worth is known as transaction. Monetary transaction क्या होगा बच्चों? जहां पे हमें इन सारे transactions की मतलब exchange की value हमें पता हो. The transaction which involves exchange of goods and the transaction which involves an exchange of money or money's worth directly or indirectly is called as monetary transaction. यहाँ पे हमें value पता होगी, कितने की goods हैं, कितने की services हैं, और अगर हमें money और money's worth directly और indirectly पता है, exchange होने वाला है, तो those transactions are known as monetary transaction. And when I talk about directly और indirectly, यहाँ पे एक category होगी cash transaction, जहाँ पे on the spot payment कर दिया जाएगा, and on the other hand there will be one more category of credit transaction जहाँ पे पेमेंट ऑन द स्पॉट नहीं होगा. सो बच्चों कैश ट्रांजैक्शन क्या होंगे? या ये रहे हमारे कैश ट्रांजैक्शन. अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन व्हिच कैश इज पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली, इसे हम कैश ट्रांजैक्शन कहेंगे. एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज द इन व्हिच द कैश इज नॉट पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली बट at the time of transaction, but it will be paid or received on a
लेटर डेट, फ्यूचर डेट में हम पेमेंट की जहां पे प्रॉमिस करते हैं, सच ट्रांजैक्शंस आर नोन एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और ये वाले ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस तो स्टूडेंट्स के फेवरेट भी होते हैं। हम जाते हैं नियरेस्ट शॉप में परचेस करने के लिए, जनरल स्टोर में, और हम उनसे कहते हैं कि पैसे पापा देंगे या पैसे मम्मी देंगे। तो ये जो ट्रांजैक्शंस हम परफॉर्म करके आए, दोस ट्रांजैक्शंस आर नोन एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कभी कभी हम जाते हैं ऑन द स्पॉट पेमेंट करते हैं, गुड्स लेके आते हैं, दोस ट्रांजैक्शन आर नोन एज कैश ट्रांजैक्शन। एंड डू रिमेंबर, हम बच्चों अकाउंट्स में इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब हम रिकॉर्ड कीपिंग की बात करते हैं, दैट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इज ऑल अबाउट रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो इस रिकॉर्डिंग में we are going to record monetary transactions only. हम सिर्फ monetary transactions को record करेंगे, we are not going to record non monetary transaction in the books of accounts. अब ये non monetary transactions क्या होते हैं, जिससे मैंने पहले बताया, transaction which does not involve an exchange of money or money's worth directly or indirectly, they are called as non monetary. जहां पे money और money's worth का exchange involve नहीं होता है, जहां पे goods and services की value पता नहीं होती है, such transactions are known as non-monetary transaction. And this non-monetary transactions, इनके एग्जांपल्स के फॉर्म में हम बच्चों बार्टर ट्रांजैक्शंस को स्टडी करते हैं, जहां पे एक कमोडिटी दूसरी कमोडिटी के अगेंस्ट एक्सचेंज होती है, बट वैल्यूज हमें पता नहीं होंगी। या तो दैट्स हाउ, ये हमने कंप्लीट कर लिया है हमारा सेकंड पार्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। Transactions are classified into two categories, monetary and non-monetary. Monetary transactions are the one in which value of goods and services is known to us, or when exchange will take place against money or money's worth, that can be directly or indirectly. And on the other hand, non-monetary transaction where the exchange take place but money involved नहीं होता है, value पता नहीं होती है, and such transactions are known as non-monetary transaction. इन दोनों में से कौन सा हम रिकॉर्ड करते हैं? We are going to record monetary transaction in the books of accounts and we won't be recording non-monetary transaction in the books of accounts. हम ऐसे ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। थैंक यू।